So, the grand success of crash course given by ICRA in 2020 is destined to be repeated in 2021. Biggest gift of this program, biggest. In case you decide to join for the GS program next year, you will get this 5,000 relaxation. This course is very good, is also very good for new aspirants who are planning to give in 2022 and 23. For them it will be a boon. In this course they will know what exactly to do in prelims. It's not only for those who are appearing in 2021. It's for all the future aspirants. This 5,000 will help you to save at least your 50,000 and many of your mental hassle. As you took it happily last year, you will again come to us for the revision, for the preparation of this examination, and hope to see you soon in ICRA. Thank you. Hi everyone, welcome to IAS, and today we'll be covering current affairs from 15th of March to 21st of March. So as always, without wasting any time, let's just directly get into it. And the first topic we have this week is Energy Efficiency Enterprise Certifications Program. So as we all know, the brick industry हमारे country में is that nearly contributes 0.7% of the country's GDP, and we are the second largest producers of bricks. So we definitely need some kind of program जिससे हम brick industry को energy efficient बना सकें, right? And hence our government came up with this energy efficiency enterprise certification program so that जो brick manufacturing industry है उसको ज़्यादा energy efficient बनाया जा सके, right? So what exactly the certification program is all about? It basically ये एक सर्टिफिकेशन स्कीम है कि कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को who will be adopting a method of energy efficient manufacturing while manufacturing the burnt clay bricks जो हम normally अपने घरों में manufacturing के लिए घर बनाने के लिए जो use करते हैं brick. So they are burnt clay bricks generally, right? And who will be providing these certificates? वो certificates provide करने वाला है Bureau of Energy Efficiency. And on what criteria this organization, this agency will be providing the certificates कि अगर कोई manufacturer अगर energy efficiency technologies अगर या फिर energy efficient तरीके से manufacturing कर रहा है तो BEE will be providing the certificates to those manufacturings. Apart from that, अगर वो manufacturing industry if they are producing lower density wale bricks, so then also they will be provided with this certificate, right? Now, what is the significance of this program? The very important question to be dealt with. So, of course, as we have started with this, we have to, make this industry more energy efficient, right? So, this program will help the brick industry shift towards more efficient technologies, that is energy efficient technologies. Okay. And this adoption of E3 certifications, this energy efficient certification program will save the energy of about 7 million tons of oil equivalent, MTOE. Tons of oil equivalent is nothing but just a unit of energy which is defined as the amount of energy released by burning 1 ton of crude oil, right? And hence this way we will be saving about 25 million ton by 2030. Alright, so to summarize this topic, we've read that a certification program was recently launched, and the major goal behind releasing and introducing such program is so that we can make our brick manufacturing industries more energy efficient, right? So that was all about it. Up next we have Committee on Saraswati River, right? जो भी rivers हमारे news में होती हैं, make sure that you prepare a map on them, उनके जो भी routes हैं, जो भी उनके tributaries हैं, distributaries हैं, whatever, the states they're flowing in, you remember, you prepare it well, right? So recently, actually, बहुत पहले ही एक कमेटी बनाई गई थी to study the Saraswati River. अभी उसको दोबारा से constitute किया गया. It is now been reconstituted, right? And that aim basically इस committee का है to study this river and to draw
आप अ प्लान टू आइडेंटिफाई इट्स बेसिन, एक रिवर बेसिन को स्टडी करने के लिए. रिवर बेसिन इज बेसिकली, रिवर बेसिन इज अ पार्ट ऑफ लैंड थ्रू विच द मेन रिवर एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोज, राइट. तो रिवर बेसिन को स्टडी करने के लिए और उसका पूरा जो पाथ है उसको डिफाइन करने के लिए सरस्वती रिवर के इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. दिस कमेटी विल बी चेयर्ड बाय कल्चरल मिनिस्टर. हालांकि इसमें और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स इंक्लूडेड हैं, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट इट विल बी चेयर्ड बाय culture minister, right. What is more important regarding this topic for our exam perspective is to know about the river itself, is to read about the Saraswati River itself. Okay, so the Saraswati River is a tributary of, as we all know, is a tributary of Alaknanda River. Alaknanda River जो कि you must have read Gangetic River के बारे में और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, उसके रूट्स के बारे में. सो अलकनंदा मीट भागीरथी एट देव प्रयाग विच फॉर्म्स दी गंगा वहाँ से, ठीक है. एंड दिस सरस्वती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दैट अलकनंदा रिवर, राइट, विच फ्लोज इन उत्तराखंड ऑफ कोर्स. ओके, सो इट इज अ mystical river which is mentioned in Rig Veda or later Vedic period, maybe later Vedic text में भी इसको mentioned किया गया है, right. Make sure whatever the rivers are given, you must remember their roots and their tributaries at least, right. Okay. Now, if we talk about ASI, that is Archaeological Survey of India, so it comes under Department of Culture, which comes under Ministry of Culture, or Alexander Cunningham ने इसको he founded this organization, okay, in 1861. और इसका काम, as you all know, is basically archaeological research करना, archaeological evidences का analysis करना और sites को excavate करना, conservation, preservation of such monuments, etc., etc. Right. So to summarize this topic, we have read that there's a committee which has been reconstituted to study this river Saraswati. Right. We've also read that this is tributary of Alaknanda, which is again Alaknanda, which meets Bhagirathi, and then they form Ganga from there. Okay, they meet at Dev Prayag and then they form Ganga. And we've also read ki for our exam perspective, what is important for us to remember is about these rivers only, okay, and the tributaries and the routes, etc., etc., right. So that was all about it. Yeah. Up next we have SIPRI report on arms. So 2-3 things regarding this topic I'd like to mention here. सबसे पहला सिप्री रिपोर्ट, इसको कौन रिलीज करता है, और विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हमारे जो भी रैंकिंग्स हैं हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, वो हमें याद रखने की ज़रूरत है. सो दीज 2 थिंग्स मेक श्योर यू रिमेंबर कि हु रिलीजेज इट और इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट के, राइट. सो स्वेडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज SIPRI, releases a report. They released a report, and the report is called Trends in International Arms Transfer Report. Okay, so SIPRI releases this report. Make sure you remember this. Okay, the findings of the report are that India is the second largest arms importer. Saudi Arabia के बाद we are the second largest arms importer. ठीक है, हालांकि हमारे arm import decrease हुए हैं, but still we stand at the second position. If we talk about the हम कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, सो द मेजर सप्लायर इज़ रशिया. 2016 से 2020 के बीच में if we see, so the major supplier is Russia, which supplies 49% of of the arms to us. Then in the second position France, and then Israel. तो ये 3 major सप्लायर्स है जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सपोर्ट, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं और हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते भी नहीं है, जस्ट 0.2% शेयर, और वो भी हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को, फॉर एग्जांपल म्यांमार, श्रीलंका, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हीं को हम एक्सपोर्ट करते हैं. सो दैट्स नॉट अ मेजर पॉइंट टू मेक हियर, बट या वी एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज 3 countries and we are the second largest importer. Yeah, we import from these countries and we are the second largest importer. So this is really important to remember. If we talk about the global findings, तो 5 larger importers, सबसे पहला है US, then Russia, France, Germany and China. तो ये सबसे ज़्यादा exporter है. I'm sorry, they're not importers, they're exporter. US is the largest exporter in terms of, if we talk about globally, right? So to summarize this topic, we've read
that there's this report called Trends in International Arms Transfer Report, which is released by SIPRI, and we've read about the findings pertaining to India specifically. All right, moving on. So up next we have Project Rehab, or Project Rehab, whatever you call it. So recently KVIC, Khadi and Village Industry Commission, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है रिहैब, दैट इज रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज. वो बीज को यूज करके एलिफेंट और ह्यूमन में जो कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं उनको रिड्यूस करने की दे हैव ट्राइड. इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट जो वो कुछ जगहों पे बेसिकली आई गेस साउथ साइड में, आई गेस इन कर्नाटका दे आर गोइंग टू लॉन्च दिस. बट या दे विल बी यूजिंग बीज इंस्टेड ऑफ फेंस. तो वो बीज को एक फेंसिंग की तरह यूज़ करेंगे सो दैट दे कैन प्रिवेंट द अटैक ऑफ एलिफेंट्स, राइट. और इसीलिए उसको बी फेंसिंग भी बोला गया है, टू मिटिगेट द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द कंट्री, जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं. एवरी डे वी रीड अबाउट elephants, human elephant conflicts, right? And it is a sub-mission under KVIC National Honey Mission. KVIC का एक National Honey Mission जो है उसी का ये एक sub-mission है. National Honey Mission, if we talk about it, it is basically to provide the employment and the income to rural and urban youth. और ये हनी बी को एक तरीके से एक नेचुरल रिसोर्स की तरह भी कंजर्व करने के लिए दिस प्रोग्राम इज़ बिन एम्ड एट. एंड दिस प्रोग्राम इज़ ऑल्सो गोइंग टू प्रमोट द बी कीपिंग फॉर, ताकि पॉलिनेशन सर्विसेज बेटर हो सके. अगर हम बीज रखेंगे तो वो बेटर पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे हमारी, राइट. सो या, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इट वॉज लॉन्च as a pilot project at 4 places located in the periphery of Nagarhole National Park, जो कि कर्नाटका में situated है. Talking about this, Nagarhole National Park कर्नाटका में located है, तो इससे I'd like to make one point here that make a list or take out your map or mark in the atlas only कि जो भी important national parks हैं state wise you map them, you see their location. जैसे कर्नाटका में ही बहुत सारे, for example Bandipur National Park is there, Anchi National Park is there, Nagarhole National Park is there, so a lot of national parks are there in Karnataka itself. So while you are preparing national parks, make sure that you point their locations as well. Exact location आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा national park कहाँ पर situated है. At times they ask you to arrange the national parks, or at times they ask you कि वो specific location से आपको पूछ लेते हैं. So that is very, and hence it becomes very important for us to remember it like that. ठीक है? All right. So to summarize this topic, Project Rehab, जो कि which is to reduce the elephant and human conflicts using the bees as a fences, right? And it comes under National Honey Mission, right? Okay, so up next we have Mera Ration mobile app. All right, we all must have read a lot about rather one nation one ration card system. तो इसी के to facilitate this system only, to facilitate one nation one ration card system only, there's recently एक mobile app launch किया गया है by Ministry of Consumer Affairs, that is मेरा राशन मोबाइल ऐप. ठीक है, जिसका aim basically वही होगा, because it aims at facilitating this one nation one ration card system. Before we come to this mobile app, let's read about the one nation one ration card system only. So it basically if we talk about the ministry first, so this comes under Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs के अंदर आता है, और उसमें भी it comes under Department of Food and Public Distribution. एक interstate portability को वो उसको ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को बनाया गया है, राइट. इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी मीन्स 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में भी वी कैन यूज द सेम राशन कार्ड, राइट. एंड इट कम्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. सो इसमें NFSA में बेनिफिशरीज, पर्टिकुलरली माइग्रेंट बेनिफिशरीज भी कैन क्लेम द फूड ग्रेन्स फ्रॉम किसी भी फेयर प्राइस शॉप से. माइग्रेंट वर्कर्स भी फूड ग्रेन्स क्लेम कर सकते हैं, राइट. एंड उसका मेजर एम बेसिकली वही था कि सेम राशन कार्ड से हम अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट का राशन कार्ड है तो हम दूसरे स्टेट में भी जाके उसको यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दिस इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हैज़ बिन
used here. Now coming back to the mobile app, so this mobile app is going to do the same function. It aims to help those ration card holders only जो अगर suppose एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं to earn, right, to earn for their livelihoods, अगर एक state से दूसरी state पे चले जाते हैं, so it is to facilitate those ration card holders only. This mobile app will be helping achieving one nation one ration card system only, right, and it has been developed by NIC, that is National Informatics Center. All right, yeah, so that was all about Mera Ration mobile app, which is to facilitate and promote one nation one ration card scheme only. Okay, yeah, so up next we have World Air Quality Report 2020. Again, इसकी कोई भी रिपोर्ट होती है तो उसका the first question which should come to our mind is who releases this report. So IQ Air, Swiss Air Quality Technology Company करके है, they release this report, right? And then next come of course कुछ key findings और especially इंडिया से रिलेटेड जो अगर कुछ फाइंडिंग्स हैं तो वो तो हमें याद रहनी चाहिए, फॉर वी कैन कोट देम इन आवर एग्जामिनेशन. सो दिस report basically this report basically is based on PM 2.5 data जो है particulate matter 2.5 data के basis पर ये report अपने findings को release करता है, and it says regarding India that it is the home to 35 of the world's 50 most polluted cities in the world. ठीक है, 50 में से 35 तो हमारे यहाँ ही मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, एंड इंडिया हैज़ गॉट दिल्ली हैज़ ranked 10th most polluted cities इस ranking में. If we talk about the particular cities, so yeah, here it is. Xinjiang, China में is the topmost polluted city in the world, followed by Ghaziabad, which is situated in Uttar Pradesh. So these are the two cities जो सबसे ज़्यादा polluted है. If we talk about these are the global findings, not the Indian findings. Globally, we are talking here. All right, so that is a really cause of concern कि हमारा एक city comes under the top 2 polluted cities globally. Okay, yeah. So these two things you must remember for your exam at least. Moving on. So next up we have development finance institutions. All right. So development finance institution, as the name indicates कि ये वो financial institutes हैं जो development projects को finance करेंगे, right, या करते हैं. So development finance institutions are those institutions which finance the development of the country or the infrastructure of the country, right. जैसे for example अभी एक बहुत ही major project was launched, national infrastructure pipeline. तो ऐसे projects को finance करने के लिए such bodies were constituted. So yes, so recently what has happened that cabinet has approved the bill to set up a development finance institution, और इस institution का हमने नाम दिया है National Bank for Financing Infrastructure and Development. Initially government इसमें 100% stake hold करता था, but gradually वो कुछ 26% में लाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे. Government is planning कि ऐसे development finance institution में जो हमारे काफ़ी सारे हैं एक्चुअली, उनमें हम अपने स्टेक्स थोड़े कम कर दें. And these kind of development banks will, like I told you, will be providing finance to the national projects, like for example, National Infrastructure Pipeline. All right, and yeah, talking about this in particular development finance institutions, like I told you कि जो national importance के जितने भी infrastructure projects होते हैं उनको ये finance करते हैं, right. और हमारे यहाँ बहुत सारे development finance institutes थे एक्चुअली जो कि अब उनको बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया. लाइक फॉर एग्जांपल IDBI बैंक वाज द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का ही वो एक पार्ट था. सिडबी हो गया आपका, नबार्ड हो गया, ये सारे DFI में ही आते थे, बट नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू बैंक्स. और सबसे पहला जो DFI था वाज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमने 1948 में लॉन्च हुआ था, राइट. So that was all about it. Up next we have genome mapping
in Indian Ocean. So genome mapping and Indian Ocean, these are the two terms to be dealt separately here. Genome mapping I'd like to make you understand first. Genome mapping हम इसको biologically ही समझेंगे and then we'll relate it to the Indian Ocean. Alright, genome mapping actually, mapping का मतलब ही होता है to locate something. राइट तो जीनोम मैपिंग में व्हाट वी डू कि क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स और उन जीन्स की पर्टिकुलर लोकेशन हम ना लोकेट करते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल जीनोम मैपिंग, दैट इज जीन्स का मैपिंग, जीन्स की लोकेशन फाइंड करना कि कौन सा जीन कहाँ पर लोकेटेड है, सो दैट इफ वी गेट द राइट पोजीशन, इफ वी गेट द राइट लोकेशन, वी कैन, इफ सपोज देयर इज एनी डिजीज एट दैट पर्टिकुलर जीन, तो हम उसको रेक्टिफाई कर सके कैसे भी, उसको ऑल्टर करके या उसको रिप्लेस करके या जैसे भी. सो देर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस देन. सो बट बेसिकली जीनोम मैपिंग इज कि जीन्स को लोकेट करना क्रोमोसोम में. आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. जीनोम रेफर्स टू एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए दैट इंक्लूड्स ऑल इट्स जीन. ठीक है, डीएनए जिसमें सारे जीन्स होते हैं. एंड मैपिंग दीज जीन्स simply means finding out the location of the gene in a chromosome, which I have just told you कि mapping का मतलब ही यही होता है कि उस gene की particular location को हमने we have to find it out in that particular chromosome, right? Now moving on to our current aspect, that is genome mapping in Indian Ocean. Now we are doing genome mapping in Indian Ocean. Now how are we going to do it? So we will be, okay, let me first tell you the objectives of this project. So this project will be revealing the internal working of the body of the ocean at cellular level. एक cellular level पे ocean में जितने भी organisms हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, how does they, how are they working? So it is going to reveal that. To understand the biochemistry and the response of the ocean to climate change. ठीक है, पोल्यूशन जो इंक्रीज हो रहा है, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस जो हो रहे हैं, उनको एक डिटेल में पढ़ने के लिए वी आर गोइंग टू डू द जीनोम मैपिंग इन द इंडियन ओशन. एंड NIO इज गोइंग टू डू दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी. ऑलराइट, NIO की एक रिसर्च टीम विल बी गोइंग ऑन बोर्ड इट्स रिसर्च वेसल सिंधु साधना पे वो ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम इंडियाज ईस्ट कोस्ट ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया. वो फिर नीचे आएंगे, देन ऑनवर्ड पोर्ट लुइस मॉरिशस की तरफ थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे, फिर वो ऊपर पाकिस्तान तक आएंगे. सो दे आर गोइंग टू टेक दिस रूट and they're going to complete it and complete this genome mapping of Indian Ocean, right? And what exactly they're going to do, they're going to collect the samples, कुछ samples gather करने वाले हैं और फिर उनको वो map करने वाले हैं, right? So they'll be gathering samples of genome mapping of microorganisms at an average depth of 5 kilometers and then उनका DNA RNA जो भी structure है वो पढ़ने वाले हैं. Then they're going to map them like जैसे ह्यूमन ब्लड सैम्पल्स की मैपिंग करी जाती है, वैसे ही उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स की भी वो मैपिंग करने वाले हैं. बट द मेजर क्वेश्चन ओवर हियर अराइजेस इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? Why are we doing it? So this is going to enable the scientists to identify factors controlling the changes in the RNA, DNA in the ocean and various stressors impacting them. ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स के जो भी ऑर्गेनिजम्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस वी आर प्रोवाइडिंग देम, तो उनके पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग विच पार्ट ऑफ द ओशन हैज़ अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच मिनरल और एलिमेंट. इससे हमें ये भी पता चलेगा कि कौन से पार्ट ऑफ ओशन में कौन सा मिनरल कहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट है, ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रेजेंट है, राइट? एंड yeah, we can also we'll also be able to इसमें कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी हम बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम एंटी कैंसर ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एंजाइम्स टू एंटीवायरल मॉलिक्यूल्स. तो बहुत सारे यहाँ पर स्कोप्स हैं, वी कैन काफ़ी स्कोप है यहाँ पर जो हमारी हेल्प कर सकता है यूजिंग दिस, राइट? Talking about this institute, National Institute of Oceanography, so it was established in 1966 और ये it is one of the 37th constituent laboratory CSIR की, जो कि न्यू दिल्ली में situated है. The principal focus इसका है on observing and understanding special oceanographic characteristic of Indian Ocean only. So this is what it majorly aims at,
right? So that was all about it. To summarize this topic, हमने पढ़ा what is genome mapping. We've read we're doing it in Indian Ocean. We've also read that what are the objectives of it, as to why are we doing it, and we've also read that how are we going to do it. कि हम कुछ samples gather करने वाले हैं, and then we are going to read them in the laboratory. We've also read कि what are the applications and what are the importance of this process, of this program, of this genome mapping Indian Ocean में जो हम कर रहे हैं, right? Yeah, so that was all about it. Up next we have sea buckthorn plantation. Okay, so any plant जो कि अब आपको लग रहा है कि रिपीटेडली न्यूज़ में है, या फिर रिपीटेडली भी ना हो, अगर आपको लग रहा है इफ इट इज़ इन न्यूज़, यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट. They might ask you generally, वो आपको UPSC can give you this direct question about, they can give you this name and they can ask you what exactly it is. So it is a plant. हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड किया है कि वो कोल्ड डेजर्ट एरिया में इस प्लांट को ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है. विल बी रीडिंग दोज एप्लीकेशंस एज वेल, बट बिफोर दैट लेट्स रीड अबाउट द प्लांट इटसेल्फ. सो इट इज़ अ श्रब दैट प्रोड्यूसेस एडिबल बेरी, वो लगते हैं इस पे, राइट. एंड या इट इज़ जनरली ये यहाँ पर ड्राई एरियाज ऑफ कोल्ड डेजर्ट लद्दाख स्पीति वाले रीजन में ये उगती है, ठीक है. इसकी of course हम इसको उगा क्यों रहे हैं, because it has a lot of benefits. It has medicinal benefits, ecological benefits, ठीक है, बहुत सारे commercial benefits भी हैं, तो बहुत सारे इसके benefits हैं. Let's read them out point wise. Medicinal benefits, so it uses in the treatment, it can be used in the treatment of stomach हर्ट, स्किन प्रॉब्लम्स, और वाइटामिन्स की तरह भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं. इकोलॉजिकल, तो इसको हम फ्यूल, फूड और फॉडर की तरह यूज़ कर सकते हैं, राइट. इट ऑल्सो चेक्स द सिल्टेशन इन रिवर और फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करने में ये हेल्प करता है, राइट. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स कमर्शियल बेनिफिट्स, तो ये जूसेस बना सकते हैं हम इसके बहुत सारे, इसके बहुत सारे न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स भी हम बना सकते हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. सो दीज आर द टोटल बेनिफिट्स ऑफ सी बकथॉर्न प्लांटेशन. और मेक श्योर दैट यू रिमेंबर कि ये हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और स्पीति वाली जगह से रिलेटेड है. कोल्ड डेजर्ट एरियाज में ये उगाया जाता है और इसके कुछ एप्लीकेशंस, राइट. या, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. Up next we have Stop TB Partnership. So this is a partnership, this is an international global partnership, जिसके अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनको चेयरमैन बनाया गया है फॉर द 3 years, राइट, जो कि जुलाई 2021 में शुरू होगा. बट व्हाट दिस पार्टनरशिप इज़ ऑल अबाउट, एंड और TB के लिए हमारे क्या और इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के, सो विल बी रीडिंग ऑल ऑफ दैट. तो it is an international body only, जिसमें काफ़ी सारे global countries, they associate together and then they strategize and make the policies to stop the TB or to alleviate the TB. So its basic aim to eliminate only TB as a public health problem, right? But what's more important for our exam perspective is that we should know the India's initiatives against tuberculosis. India के क्या initiatives हैं TB के against, that we should know. We can definitely quote these points in our mains examination. ये वाले points India के और TB तो टॉपिक ही बड़ा important है, क्योंकि it is at such a large scale in our countries, hence it becomes very important for us to remember these points. First says that India has committed to eliminating TB in country 2025, जो कि हमारा global, actually जो हमारे ग्लोबल गोल्स हैं उनकी डेडलाइन है 2030, और हमने सोचा है कि हम उससे 5 साल पहले ही विल बी एलिमिनेटिंग TB इन आवर कंट्री, दैट इज़ बाय 2025. द नेक्स्ट सेज द नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर TB एलिमिनेशन. This plan is a framework to provide the guidance for the activities of various stakeholders, ताकि TB का जो बर्डन है और TB से जो मॉर्टेलिटी होती है और या जो भी मॉर्बिडिटीज़ होती हैं उनको रिड्यूस किया जा सके. और TB हारेगा देश जीतेगा कैंपेन जो अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था, इट एम्स टू इम्प्रूव एंड एक्सपैंड द रीच ऑफ ट्यूबरकुलोसिस केयर सर्विसेज ओनली, कि TB के लिए जितनी भी केयर सर्विसेज हैं हमारे कंट्रीज़ में उनका रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. सो दैट इज़ व्हाट इट एम्ड एट. सो बाय 2022 वी हैव टू एक्सपैंड द रीच ऑफ the care services regarding TB in our country, right? So that was all about this topic. Up next we have SERB.
SERB Prism portal. SERB stands for Science and Engineering Board. What this portal is all about, and this Prism is Project Information System and Management. So this portal basically is to provide the information regarding जितने भी सर्ब के अंडर प्रोजेक्ट्स आते हैं, जितने भी साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो सारे इस पोर्टल में अवेलेबल होंगे, राइट. द इंफॉर्मेशन इसमें every information will be available. You can go and check any information regarding science and engineering board. लाइक फॉर एग्जाम्पल फंडिंग डिटेल्स, कोई भी रिसर्च की समरी है, कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं, कितने उनके क्या आउटपुट्स रहे हैं, क्या कितनी पब्लिकेशंस हैं, कितने पेटेंट्स हैं इस फील्ड में. सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल एट दिस पोर्टल. नाउ यू माइट आस्क यू व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पोर्टल, कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. सो it will help the researchers to look at various important things. Like for example, research के क्या trends रहे हैं. Like for example, कुछ researches पहले हो चुकी हैं and now you are the new researcher जिसको किसी topic पे research करना है. So this portal is going to help those people who are going to research on any particular topic. तो they can see, they can analyze कि क्या research के पहले ट्रेंड्स रहे हैं. लर्निंग अबाउट कटिंग एज साइंस, लोकेटिंग क्रिटिकल इक्विपमेंट्स इन देयर विसिनिटी, हेल्पिंग सीक collaboration across disciplines. So these are some of the importance at whole. If we talk about Science and Engineering Board, so ये एक statutory body है, 2009 में establish हुई थी, and as the name indicates, it comes under Ministry of Science and Technology. और ये इसका basic aim is also, I think, clear to all of us, that it is to promote the basic research. Science and engineering में research को promote करने के लिए this body was constituted, and it is a statutory body, hence it becomes important for our exam. Constitutional body है, statutory body है, even the executive resolution से भी काफ़ी सारी bodies होती हैं, pass होती हैं, वो भी important होती हैं, right? So yeah, to summarize this topic, we've read SERB Prism portal. ठीक है, किसने लॉन्च किया है? सर्ब ने लॉन्च किया. we've read about साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड सर्ब के बारे में भी हमने पढ़ा, एंड we've read कि ये पोर्टल पे हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी और उनके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, राइट. अप नेक्स्ट वी हैव व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी. तो ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर आवर एग्जाम परस्पेक्टिव. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी एक वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसको हम व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी कहते हैं. कि अगर इन शॉर्ट, अगर इट सेज कि अगर आपके व्हीकल बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, यू शुड रिमूव देम, यू शुड नॉट पुट देम ऑन रोड, यू शुड स्क्रैप देम. सो दैट्स द पॉलिसी, दैट्स व्हाट इट सेज. लेट्स नाउ read certain things in detail. What are the features of this policy? The first feature says कि a vehicle has to undergo fitness test. ठीक है. तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 years इन केस ऑफ प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल, एक फिटनेस टेस्ट आपको कराना पड़ेगा अगर आपने 20 साल अपने व्हीकल के पूरे कर लिए, इफ़ यू हैव अ प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल, एंड इफ इट इज़ अ कमर्शियल व्हीकल इट शुड बी 15 years, राइट. यू नीड टू अंडरगो अ फिटनेस टेस्ट आफ्टर 15 years इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, राइट. सेकेंड सेज एनी व्हीकल दैट फेल्स द फिटनेस टेस्ट, या फिर वो अपनी RC नहीं रिन्यू करवा पाता, देन दैट ओनर शुड बी एनकरेज टू स्क्रैप द व्हीकल्स, कि अब तो हटाई दो, ये बहुत पुराना हो गया आपका vehicle. Third says that re-registration fees will be increased, कि अगर आप RC रिन्यू कराने गए हो, अगर आपका व्हीकल बहुत पुराना है पर फिर भी आपको री रजिस्टर कराना है, तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई है, सो दैट टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम रनिंग दी ओल्ड व्हीकल्स, ऑफ कोर्स, राइट. द फोर्थ वन सेज ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द कंट्री, ताकि व्हीकल का स्क्रैपिंग ईजी हो सके. गवर्नमेंट व्हीकल्स या फिर जितने भी PSUs ओन करते हैं, वो वाले व्हीकल्स विल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 15 years, तो उनको तो 15 साल के बाद हटाई दिया जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं. विंटेज कार्स इसमें नहीं आती हैं. विंटेज कार्स के लिए अलग guidelines will be formulated, so vintage car is an exception under this, right. Incentives for scrapping, there are certain incentives जो government ने दिए हैं, so that अगर आपका बहुत ही पुराना व्हीकल है तो आप उसको स्क्रैप कर सको. लाइक फॉर एग्जाम्पल, the first says a vehicle scrap value of X showroom price of the vehicle ranging from 4 to 6% will be given
टू द ओनर अगर उनको स्क्रैप करना है अपनी, अगर वो स्क्रैप पॉलिसी अगर वो चूज़ करते हैं तो 25% का रिबेट भी आपको मिलेगा रोड टैक्स के ऊपर इफ़ अंडर अंडरगो दिस, एंड व्हीकल मैन्युफैक्चरर को एडवाइस किया जाएगा कि आप 5% का डिस्काउंट भी दो नए व्हीकल पे, अगर अगर जो भी जो भी बायर है उसके पास क्रैपिंग सर्टिफिकेट है तो उसको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा. सो इन ऑल दीज आर द सर्टेन इंसेंटिव्स विच आर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ताकि स्क्रैप कर सके. अगर आपका बहुत ही पुराना व्हीकल है, यू कैन स्क्रैप इट, एंड ऑफ कोर्स it is overall it is good for the pollution level, definitely. So for our environment, for our climate as well. So that's the whole idea behind it, saving our environment. Okay. And the last topic of this week is Coalition for Disaster Resilient Infrastructure Initiative. तो EU के जो भी जो 27 members हैं उन्होंने मिलके एक this initiative they've started called Coalition for Disaster Resilient Infrastructure Initiative, and our Prime Minister has launched it in 2019 UN Climate Change Summit पे. इसका major aim यही है that it is this initiative wants to promote the resilience of new and existing infrastructure system. कि infrastructure system को हमने ऐसा बनाना है so that it can deal with the disaster risk, it can deal with the climate risk, right? And it also supports the sustainable development. So that's what it works for. That's what this initiative and this coalition, this 27 member European Union works for, right? Yes. So nothing major you need to remember about this topic. बस यही कि वो डिज़ास्टर रिस्क वो हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बेटर बना सकते हैं सो दैट वी कैन मिटिगेट द डिज़ास्टर रिस्क, एंड अबाउट दिस कोलिशन विच इज़ अ 27 member European Union coalition, right? So that was all about this week. I hope it was informative. Thank you so much.